Hello and welcome to the Rohit Sinha show. Today we'll be talking about artificial intelligence and its effect directly or indirectly on mankind. And to discuss, we have the founder of Yellow.AI, a conversational AI company valued at 500 million US dollars. So let's welcome Rashid Khan. Hello Rashid, we are really happy to have you here on our show. We just wanted to know कि आपने ये Yellow AI, how did you started it? मतलब कहाँ से create किया and from where did it come into your mind? I mean, yeah, thank you Rohit for having me on the show. Super excited to be talking to with you here. Actually हमारे जो जर्नी शुरू हुआ वो 2015 में शुरू हुआ. मैं कॉलेज में पढ़ रहा था NIT वारंगल में. मैं वहाँ से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की और बचपन से ही मुझे इस चीज़ का वो था कि अपनी कंपनी शुरू करनी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है लोगों के लिए और दुनिया के लिए बहुत भला करना है. तो हमेशा से मेरा वो था और इस जर्नी में मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा कि मुझे ये चांस अर्ली ऑन मिल गया मेरे करियर में स्टार्ट करने का. तो ये कंपनी मैंने शुरू की अपने कॉलेज के सीनियर्स के साथ, रघु और किशोर, 2015 में. उस वक्त क्या हो रहा था कि अगर आप मेरे साथ उस टाइम पे चलें, वो एक ऐसा दौर था जब व्हाट्सएप का पॉपुलैरिटी इंडिया में बहुत बढ़ रही थी और मैसेजिंग ऐप्स जो है बहुत पॉपुलर हो रहे थे और वही 2015 के टाइम पे. हाँ, और वो ऐसा टाइम था कि जहाँ पे हम लोग के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं और थोड़े एजेड लोग हैं, उन लोग मोबाइल पे वन ऑफ द फर्स्ट एप्लीकेशंस जो यूज़ कर रहे थे वो है मैसेजिंग एप्लीकेशंस. तो उसी टाइम वो पूरा दौर शुरू हुआ. तो जब हमने वो देखा अनप्रेसिडेंटेड राइज मैसेजिंग ऐप्स का, तो हमको एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि आगे चल फ्यूचर में जूम इन करेंगे तो ये रियलाइज़ हुआ कि कंपनीज़ को भी ये सब चैनल्स अडॉप्ट करना पड़ेगा और उनको अगर ये सब चैनल्स अडॉप्ट करने हैं तो उसके लिए बहुत सारे टूल्स और सर्विसेज चाहिए होंगी उनको व्हाट्सएप पे या कोई भी मैसेजिंग चैनल पे अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करने के लिए. तो तब से वो हमारा आइडिया शुरू हुआ उस चीज़ का कि हमको ये सर्विस प्रोवाइड करनी है बिजनेसेस को. और फिर येलो शुरू हुआ. हमारा जो इनिशियल कंपनी का नाम था वो येलो मैसेंजर था, जो येलो पेजेस से इंस्पायर्ड है. बहुत लोगों को शायद नहीं पता हो. येलो पेजेस, हाँ, जो एक किताब आती थी जिसमें डायरेक्टरी होती थी, उसमें आप बिजनेस और उसका नंबर देख सकते हैं. तो उसी पे हम लोग नेक्स्ट जनरेशन उसका जो बनाना चाहते थे वो था येलो मैसेंजर, कि आप किसी भी बिजनेस को सर्च करके उनको मैसेज करके बात कर सकते हैं, उनको कॉल ना करना पड़े, उनको फिजिकली ना जाना पड़े. वहाँ से हम लोग का जर्नी शुरू हुआ एंड पिछले 8 सालों में येलो हैज़ ग्रोन इनटू अ बिग मल्टीनेशनल कंपनी. हम लोग इंडिया से ऑपरेट करते हैं, बॉर्न इन बैंगलोर, बट वी सर्व कस्टमर्स अक्रॉस द ग्लोब. इंडोनेशिया हो गया, UAE हो गया, US हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया. हमारे कस्टमर्स हर जगह हैं और आज हम लोग के पास तकरीबन 700 से 1000 कस्टमर्स एक्टिव हैं. और ये कस्टमर जो है बहुत बड़े इंटरप्राइजेस हैं, जैसे इनकम टैक्स ऑफ इंडिया हो गया, बजाज फिनसर्व, इंडिगो एयरलाइंस, डोमिनोज पिज़्ज़ा, लॉजिटेक जो गेमिंग कंपनी है. तो बहुत वेरिड कस्टमर्स हैं. और हम क्या करते हैं अपने सॉफ्टवेयर से कि जो एंड कंज्यूमर्स हैं, जब मैं और आप हम लोग अपने निजी ज़िंदगी में जाते हैं और जब हमको भी कोई भी प्रॉब्लम होती है अपने किसी भी कस्टमर सर्विस से, जब हम फ़ोन करते हैं उसको हम लोग ऑटोमेट कर रहे हैं. तो आप सोचिए कि अगर आपका फ़ोन ख़राब हो गया, घड़ी ख़राब हो गई, अगर आपको इंश्योरेंस अगर रिन्यू करना हो तो अगर आप फ़ोन उठाते, उसके बाद फिर एजेंट से बात करते, उसके बाद फिर आपको क्लेम नंबर या इसका नंबर देता, उसमें तकरीबन आपको 20-25 मिनट तो फ़ोन पे लगता है. उसके बाद आपको वेट करना पड़ता है कुछ होने का. it takes a long time. हाँ, it takes a long time. Even days. हाँ, even days and weeks. उसको हम वो लेंथ को, उस टाइम को हम लोग शॉर्टन करती हैं बहुत. अगर आपको आज क्लेम प्रोसेस करना, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो बजाज हमारा बहुत बड़ा कस्टमर है. आप उसके व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए कि मेरा ये एक्सीडेंट हो गया है इस जगह पे, इस डेट पे, अपनी फ़ोटो क्लिक करिए जो एक्सीडेंट का है, और आपका क्लेम उसी टाइम प्रोसेस हो जाता है. तो वो पूरा ऑटोमेशन हम लोग ला रहे हैं मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में. सेम चीज़ अगर आप इनकम टैक्स में देखेंगे, इनकम टैक्स एक ऐसा चीज़ है जब लोगों को फाइल करना होता है, स्पेशली फर्स्ट टाइम जो लोग कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उनके. और आप अगर इनकम टैक्स के हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे तो ऑब्वियसली वेटिंग टाइम ज़्यादा है. शायद आप जो लैंग्वेज बोलते हैं वो लैंग्वेज शायद वहाँ पे नहीं उस वक्त पे अवेलेबल है. तो वो सब चीज़ हमारे बॉट्स जो है सॉल्व करते हैं हमारे एंड कंज्यूमर्स के लिए. सो लाइक योर जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम 2015. जी. नाउ 2023. Almost 8 years. Almost 8 years. 8 years. 8 years में your valuation has grown up from 0 to half a billion, which is
somewhere around 4,000 crores in Indian rupees. Yeah. So what kind of journey was it? I mean, from where did you got the fund, and how did you, push yourself from there? Yeah. I mean, getting funds is not everything. Yes. You have to work on it, then only. Yeah. There are several sorts of funds, seed funding and all of that. Yeah. So will you please explain about it? Yeah. So I think the whole ecosystem in India has helped quite a lot. The startup ecosystem here. Yeah. So as a company which was born in Bangalore, we started, and our first sort of funding came from our customers. So the customers like Indian Oil, Asian Paints, Bajaj Finserv, who became our very early customers, who believed in us when there were three of us, and went and pitched to them saying, "Ki sir, we can do this for you. We can automate your customer support." And when they believed in us, they gave us money to start off. I think that was the first funding. If I look back, one of the most pivotal points for us was working with Microsoft. So Microsoft का एक प्रोग्राम होता है बैंगलोर में, which is called Microsoft Accelerator, जो अर्ली कंपनीज को इंक्यूबेट करता है. वो उनको क्लाउड का क्रेडिट्स देते हैं, and they help in go-to-market motion. So Microsoft started introducing us early on. So Asian Paints में, Indian Oil में, they started and said कि this is a new startup which is doing something which is amazing technology. तो इसको आप देखिए किस तरह यूज कर सकते हैं. तो उसमें बहुत बड़ा Microsoft का हेल्प रहा है हम लोग के जर्नी में. और उसके बाद जब हमारे फर्स्ट कस्टमर्स आए, उनका डिप्लॉयमेंट हुआ और ये जब सक्सेसफुल हुए, तो फिर हमने सोचा कि इसको स्केल कैसे किया जाए. तो स्केल करने के लिए स्पेशली टेक्नोलॉजी बिजनेस में सबसे बड़ा जो एक्सपेंडिचर होता है वो आपका सेल्स और मार्केटिंग कॉस्ट होता है. तो अगर आप बूटस्ट्रैप रन कर रहे हैं तो फिर इट ऑब्वियसली स्लो जर्नी है. अगर उसको आपको फास्ट ट्रैक करना है तो एक राउट अवेलेबल है जो कि बहुत ज़्यादा इंडिया में उसका फोकस है, विच इज़ वेंचर कैपिटल. तो आप किसी भी वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जा सकते हैं. इंडिया में there are probably more than 100+ venture funds right now. There are so many agencies also now. हाँ. So आपके हर स्टेज पे from pre-seed, अगर आपके पास जब आइडिया है, going all the way to IPO, there are funds available who will be able to fund you for the growth and expansion for your coming years. तो हमारा जो पहला राउंड ऑफ कैपिटल था हमने रेज किया 2018 में, जो सीरीज ए राउंड था, क्योंकि हमारा कस्टमर फंडेड, हम लोग बूटस्ट्रैप कंपनी थे. फिर वी आर ऑलरेडी प्रॉफिटेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. जब हम लोग अराउंड 7-8 करोड़ का रेवेन्यू था, हमारा 20 लोग की टीम थी. तो हमने सोचा कि नाउ इट्स अ गुड टाइम टू रेज सम कैपिटल एंड एक्सपैंड outside of India as well, go into Southeast Asia, go into Middle East. So Lightspeed wrote the first check, which is Series A, and उस टाइम पे हमने रेज किया $4 million. वो पैसा यूज़ करके हमने और ग्रोथ की और अपना प्लेटफॉर्म डेवलप किया. और वो देख के जो ग्रोथ थी हमारी, लाइटस्पीड ने फिर आगे कहा कि you guys will need more money, आपको और पैसा चाहिए होगा और ग्रो करने के लिए. And that's when we raised our Series B investment from again Lightspeed India. How much was it? The Series B? Series B was $20 million. $20 million. That's a huge thing. So this is early to 2020. So January to 2020, and the place which we are sitting here, coincidentally, historical place है at least हमारे company के लिए, क्योंकि हमने Series B जब raise किया था, और उसके बाद we came here for lunch in this फर्जी cafe to celebrate the calls and all of that. So we pitched right here in Aero City, and then we just came here. So this feels very nostalgic coming back. So if we have introduced Farzi Cafe, then let's introduce their food also. So we have what do you call this, tempura fried with us. So I'll serve you. And this is dal chawal something, I don't know. I don't know. Looks very fancy though. It's some sort of fusion food, I don't know. But they have offered us. Let's see. Thank you. How does it taste? Thank you, Rohit. So tell me about your food habits. I mean, what do you like in munching and hopping around restaurants or cafes? What's your So I think over the last 8 years, what this work has also given me is the ability to travel a lot to more than probably. So you have operations in more than how many countries? More than 8 countries right now, where we directly sell, and indirectly I think we have customers in more than 20+ countries. तो उसके वजह से travel काफ़ी ज़्यादा रहता है, and food is one of the things which I love to explore. And मेरा favorite food North Indian food है. I love my butter chicken and biryani. And it's staple? Staple. I think at home I eat mostly the North Indian food because I'm from Lucknow. Dal chawal and all of that, which I love. My favorite meal to have, which is which I can have always, is fried bhindi with dal chawal and some ghee. I really enjoy that. That's the most satisfying food. Most satisfying food. For anyone and for me also. So you have an operation in more than 8 countries.
So you travel a lot. So how do you keep yourself busy when you're not working? I mean, when you're traveling abroad, what do you do? One thing which I have to do is explore new places. I Okay. think that comes very naturally. I'm also a lot into motorcycling. Oh, So last year I did a trip with my founder in Europe. So we covered more than 11 countries in 15 days. तो हमने शुरू किया जर्मनी में. so started from Germany. हाँ, तो उसके जर्मनी से फिर भी हम लोग लक्समबर्ग गए, फिर ऑस्ट्रिया गए, उसके बाद फिर स्विट्जरलैंड आए, उसके बाद फिर इटली गए, फिर फ्रांस गए, पेरिस गए, उसके बाद फिर एम्स्टर्डम में वापस जाके बाइक्स हमने वापस शिफ्ट कर दी. तो हमने वो जो ट्रिप किया था, तो हम लोग अपनी बाइक्स ले गए थे वहाँ पे. Okay. Your own bike, you took it in the cargo or something? Or हाँ, you so we shipped rented or bike? हाँ, we shipped our bikes. Oh, you shifted your bike from your place. कार्गो से. उसके बाद फिर हमने अच्छा ट्रिप किया, एंड वो जो ट्रिप था, इट वाज नॉट एट ऑल प्लान्ड, इन द सेंस कि हमको पता नहीं था कि हम लोग रात में कहाँ रुकने वाले हैं. हम लोग सुबह उठते थे, अपना राइड करेंगे, जहाँ तक जा सके थोड़ा लोकल क्यूजीन एक्सप्लोर करेंगे, लोकल खाना एक्सप्लोर करेंगे, लोकल लोगों के साथ रहेंगे. तो वो हमारा ज़्यादा एम था, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि और लोग कैसे जीते हैं, स्पेशली दूसरे कंट्रीज़ में. तो आपका फेवरेट मेमोरी, आई मीन, कौन सी कंट्री से आता है यूरोप में? So I think if I look back, if I think back, it would be Switzerland. Switzerland. हाँ. Okay. क्योंकि वहाँ की roads fantastic, और वहाँ पे जो views है, especially जो passes बने हुए हैं, Stelvio pass हो गया, और भी बहुत सारे passes हैं स्विट्जरलैंड में. I think that was the best part. Especially जो scenery है, it felt like it is just out of heaven for us. इतना greenery और so picture perfect. So you don't have to change anything in that. So I think I really enjoyed that. So what do you think about this AI effect on the employment? I mean, Yeah. in a country like India, Yeah. We have surpassed China in terms of population. Yeah. So I mean, मुझे सुनने में मिलता है कि AI is cutting on jobs. Yeah. And someone is saying कि हाँ, अगर AI is cutting on jobs, then someone has to deal with that AI. Yeah. To use that AI, Yeah. so that is also creating a job. Yeah. So it's, I mean, यहाँ पे एक वो चल रहा है जहाँ पे लोग दो तरह से divided हैं, and it's a healthy, what do you call, debate. Yeah. So what's your take on it? Yeah. So one is, first of all, with any new technology which comes in, you have some early movers who want to adopt that technology. Yeah. And there are laggards who take a lot of time, जो बहुत time लगता है किसी भी नई चीज़ को adopt करने में. हिस्टोरिकली ऐसा रहा है कि जब भी कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई है, उससे ह्यूमन काइंड का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है हैज़ ऑलवेज इम्प्रूव्ड. तो जस्ट टू गिव वन एग्जांपल, 1970s के टाइम पे जब एक्सेल रिलीज हुआ, जो कि आज बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन है, उस टाइम, उससे पहले जो है अकाउंटिंग आपका पेपर एंड पेन पे होता था, हर चीज़ मैनुअली एक चीज़. हाँ. तो जब एक्सेल आया तो लोगों को लगा कि अकाउंटेंट्स के जो जॉब हैं वो चले जाएंगे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बहुत काउंटर इंट्यूटिवली नंबर ऑफ अकाउंटेंट जॉब इंक्रीज्ड आफ्टर एक्सेल केम इन, बिकॉज उस टाइम क्या हुआ कि इट गेव यू अ सुपर पावर, राइट? इट गेव यू सुपर पावर टू डू अ लॉट मोर थिंग्स. आप फाइनेंशियल मॉडलिंग अच्छे से कर सकते थे, अपना जो रेपिटेटिव टास्क है आपका वो ऑटोमेट हो गया, कैलकुलेशंस ऑटोमेट हो गई, है ना? तो उसी तरह से एआई को जब आप देखेंगे तो आज के जो भी जॉब्स हैं उसमें से काफ़ी रिडंडेंसी ऑब्वियसली आएगी. जैसे कस्टमर सर्विस सपोर्ट सेंटर में जो आप लोग कॉल ले रहे हैं, या चैट सेंटर में जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये सब जॉब्स क्या होगा इससे कि ऑब्वियसली ये जाएंगे, लेकिन इसके बजाय और भी नए जॉब्स क्रिएट होंगे, और बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगे एआई को सपोर्ट करने के लिए. एंड टू गिव एन एग्जांपल, हमारे जैसे कंपनी में आज 600 से ज़्यादा लोग काम करते हैं to build this AI out and deliver it to lot many customers. तो आप इमेजिन करिए कि हर अगर एप्लीकेशन में AI आएगा, फ्रॉम योर नॉर्मल मोबाइल एप्लीकेशंस, गवर्नमेंट एप्लीकेशंस में हो गया, आपके टेलीफोनी उसमें हो गया, टीवी में हो गया, फ्रिज में हो गया, तो इट ऑटोमेटिकली क्रिएट लॉट मेनी जॉब्स, राइट? इसमें एक चीज़ अंडरलाइंग जो हिस्टोरिकल रहा है कि जब भी नई टेक्नोलॉजी आई है, आप कार लेने, एरोप्लेन्स लेने, रॉकेट्स लेने, इंसानियत को या जो ह्यूमन काइंड है उसको हमेशा अपस्किल करना पड़ता है. तो एज अ ह्यूमन यू हैव टू कीप डूइंग दैट. इवन व्हेन द मोबाइल केम इन, हाँ, people were reluctant. हाँ, उस वक्त जो उन्होंने बोला था कि people will get stick to it
and they'll have nothing else to do or something else. हाँ. थोड़ा बहुत it is a part, but it is playing a major role in the growth of the economy, country, and everything. Yes. And if you look at the next, 5 to 10 years, AI will become so important, both from our country's economy perspective, because हर चीज़ में आएगा, और जो हमारा 5 ट्रिलियन का the goal which all of us Indians are chasing, for it to become a reality much faster, India will be one of the forerunners for adopting AI, and showing to the world that it will become like a massive provider of service for AI. So how do you compare India and USA or maybe other countries in adoption of AI? I mean, according to you, which country has a more adoption rate? Yeah. So from my perspective, मैंने जो देखा, and this is largely coming from the data about our platforms, जो हम number of consumers which we touch, and number of conversations जो हमारे platform पे होते हैं, India is definitely leading there. Oh. हाँ, because one is primarily कि जब हमने launch की services, तो वो WhatsApp पे थी. इंडिया में already WhatsApp consumption, I think it has 500 million active users, or it might be more, 700 million active users on WhatsApp. उसके वजह scale बहुत ज़्यादा है जो हम अपने टेक्नोलॉजी में देखते हैं. We have a huge population with a huge scale. Yeah. वो है. In US what we're seeing is more sophisticated use cases. जो इंडिया में अभी हम लोग level 1, level 2 कर रहे हैं, तो US में we're doing level 3 sort of use cases. And would you elaborate what level 2 and level 3 is? हाँ, so let's say अगर level 1 अगर आपका हो गया कि simple question and answering हो गया, conversation. हाँ, conversation में. level 2 हो गया कि अगर आप suppose आपको register करना है अपना ये इंश्योरेंस का क्लेम, तो लेवल 2 हो गया. लेवल 3 हो गया मोर इंटेलिजेंस पे, कि एज अ एंड कंज्यूमर आपको नहीं लगना चाहिए कि यू आर टॉकिंग टू अ ह्यूमन और एआई, उस तरह के. तो वहाँ पे उस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है. जब वो फ़ोन कॉल पे वगैरह होता है, तो वहाँ पे उस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है. इंडिया में स्टिल वी आर डूइंग लेवल 1, लेवल 2, सम बिट ऑफ लेवल 3. इंडिया में लेवल 3 करने के लिए भी इट्स कॉम्प्लेक्स, बिकॉज हिंदी में इंडिया में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो अगर हर मॉडल के लिए, अगर आपको हर लैंग्वेज के लिए मॉडल बनाना है, तो इट्स अ लेंथी प्रोसेस. तो while we're on that journey, we see adoption volume wise India is leading for sure in AI services. So how do you see yourself and Yellow.AI in coming next decade or maybe in 5 years or something? So it is something which we think a lot about. कि what do we stand for in this world, and हमारा जो vision है is for end consumers to get very delightful experience when they interact with any brand. अगर आज आप किसी भी कॉल सेंटर पे कॉल कर लें, या फिर ऑनलाइन जाके किसी भी ब्रांड से आप चैट शुरू करते हैं, मोस्ट लाइकली योर एक्सपीरियंस विल बी बैड. आपको बहुत लंबा वेटिंग टाइम है, यू डोंट गेट व्हाट यू आस्क फॉर, मल्टीपल रीडायरेक्शन होते हैं, आपको अपनी बातें कई बार बोलनी पड़ती हैं. हमारा विजन है कि वो बहुत सीमलेस होना चाहिए. कि अगर आपको अपने गाड़ी से प्रॉब्लम है, या आपको टिकट बुक करना है, आप सिर्फ नेचुरल लैंग्वेज में बोलें कि मुझे अपना ये प्रॉब्लम है, इट शुड गेट डन ऑटोमेटिकली. तो दैट इज द विजन विच वी आर लीडिंग विद, एंड ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 years we believe that is something which is achievable. कि whenever a consumer is trying to have an interaction with a business, it will be very very delightful. मतलब कस्टमर सपोर्ट से आज लोग डरते हैं कॉल करने से पहले, people are frustrated. I think those feelings will change. That will be much more open to just calling, just speaking their query out, and it'll get done automatically. So getting away from AI, getting into our personal life now. So I just got to know, like in 2022 you got into Forbes 13 under 30. Yeah. So how did it happen, and how did you feel about it, and was there any dream of getting into Forbes or something like that? How did you achieve that? It happened very spontaneously is what I would say. I was also not aware that I would be getting listed on that particular media, but I really appreciate the work which Forbes did to identify the kind of work which I was doing and bringing into limelight. So I was probably the only technology person on that list who made it that year, apart from people like AP Dillon and a lot of I saw your video. It's a lot compared to other people. And when especially ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि while some people aspire for it, in my mind I never thought about it. It was never this thing ki, but it obviously it felt very nice. It gave a lot of validation to the work which I've been doing, because आपको पता है कि
entrepreneurship in lot of sense is a very lonely journey. There's no one who's coming and going to tell you, hey, you're doing a good job. Always keep hearing no's from the world, right? You're trying to sell to customers. A lot of people will say, "Nahi, this doesn't work." You go to VC firm, you're trying to raise money. A lot of people tell you, "Nahi, this will not work," right? But getting some kind of validation along this journey, it definitely helps you keep your morale up. It helps you build a lot of credibility in the society which we live in. So I think it was a very positive experience for me to sort of get listed, and also like a big privilege for sure. Now we'll get back on AI. Yeah. So how do you think like AI is going to help India in the government sector? Yeah. Like you are into conversational AI. Yeah. And what other kinds of AI are there which can help government sector to really grow up? Yeah. So I think the basic foundation which I will put and for people to think through is, till now we had computers, we had mobiles where interaction was very monotonous. मतलब आप कुछ क्लिक कर रहे हैं या आपको बहुत ज़्यादा टाइप करना पड़ रहा है. It was essentially like a data store for all that means, right? अभी क्या हुआ है, for the first time, imagine with AI, you are giving your computer the ability to see, to listen, to speak without any human intervention. So if you can imagine that, so if I extrapolate the use cases from there, है ना? So one of the things which come up is using a lot of images, a lot of analysis can be done on that. कि जैसे अब आपका traffic analysis हो गया, जो कि I'll have a question on this. जैसे in fact if I'm talking about something that I need to buy certain camera or certain things, so I don't search even on Google or something, but I get those what do you call sort of things on my phone. Does your phone listens to it? I mean, what exactly is happening into it? Is it getting into your personal life? How is it affecting? It does not listen to your conversations directly. There's no always on mic which is there. But what typically happens is there's also like a placebo effect which sort of comes in. So I think in this world which you're living in, यहाँ पे हम हैं, it's heavily marketing driven. मतलब हर एक ब्रांड है जो हर चीज़ एक मार्केट कर रहा है आपको. और आजकल की टेक्नोलॉजी स्पेशली विद एआई इतनी स्ट्रांग हो गई है वेयर दे आर एबल टू ड्रॉ कोरिलेशंस कि व्हाट वुड यू नीड नेक्स्ट, एंड उसके बेसिस पे इट्स एसेंशियली बी एबल टू गिव यू वेरी टारगेटेड एड्स. और इसलिए बहुत लोगों को लगता है कि मेरा फोन मेरी बातें सुन रहा है, लेकिन वैसा नहीं है. बिकॉज फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी परस्पेक्टिव एवरी टेक्नोलॉजी कंपनी इट्स इन्वेजन ऑफ योर प्राइवेसी, राइट? अगर वो हमेशा आपकी बातें सुन रहे हैं, बट दे कलेक्ट लॉट ऑफ सिग्नल्स. आप गूगल पे क्या सर्च कर रहे हो, आप किस तरह की वेबसाइट्स पे जा रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे कौन से पेजेस पे जा रहे हो, क्या टाइप की रील देख रहे हो, तो उसके वजह से इट एसेंशियली फॉर्म्स लाइक अ हाइपोथेसिस कि ये नेक्स्ट चीज़ आपको शायद ज़्यादा पसंद होगी. हाँ, इसलिए बहुत लोगों को लगता है कि मैं इसी चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ. So you can imagine the algorithm has gotten so good at predicting this is what you might need next. I think that's what is driving this behavior. And in some way, so while the government is there to take care of the privacy concerns and the big companies will definitely adhere to it, आप एक consumer level पे सोचिए कि when you require a certain service या certain product, आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, you essentially are able to get a lot of information about that proactively, on your phone, on social media, उस तरह से. So as a consumer, your journey is becoming a lot better, right? Yeah. So it definitely there is a lot of positives to how this algorithm is working. Now there has to be a layer of regulation on top of it to say कि what is till what extent is it acceptable and what extent is not acceptable, right? It should not start harming. Let's say if you think about some harmful use cases, you should not start suggesting you those things. So I think that's where this preventive thing, I think we have to really think a lot about in this society right now. What do you think? I mean, this AI got more support after post-pandemic. What exactly happened? I mean, this industry got I think a huge buzz. It got a big boost for sure. And it's ये actually culmination है कई सारी चीज़ों का. एक तो है कि टेक्नोलॉजी जो है AI की, it has been in works from 1970s, 1980s. So this is not the first time in our history that we are seeing AI coming in. What has happened is the cost of compute has gone down drastically because of the innovations which companies on the server side and on the chip side have been doing. So your cost has been going down drastically.
सेकेंड इज ओपन सोर्स की वजह से, जिसमें इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स। इंडिया में सबसे ज़्यादा डेवलपर्स हैं वर्ल्ड में आज के। इतना ज़्यादा ओपन सोर्स में लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और नए आइडियाज़ डाल रहे हैं, नया कोड डाल रहे हैं। सो वो दूसरा मोशन था कि पीपल वर एबल टू ट्राई आउट लॉट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट वाइड स्प्रेड होने की वजह से इंडिया में एंड अक्रॉस द ग्लोब कनेक्टिविटी एसेंशली स्टार्ट बिकमिंग बेटर, आई थिंक। और तीसरा जो है, बिग कंपनीज सॉ बिग पुश व्हेन लॉट ऑफ दिस डेटा स्टार्टेड गेटिंग जनरेटेड, उसको यूज करने का तरीका लोगों को समझ में आया, एंड दैट्स वेयर वी सॉ दिस एआई पुश। तो व्हेन यू रिवाइंड some time back, so OpenAI as an organization, it got formed in 2018-19 में, and they started working on algorithms first which could play games. So they started with can I build a AI application which can beat humans at chess. So that was the first this thing. Then they built a algorithm which could beat humans at a Go, which is another board game. उसके बाद they started building out lot of algorithms to be able to understand natural language. मतलब जो इंटरनेट पे जो जितना सर्च डेटा है, जो ओपन डेटा है, उसको यूज करके कैन वी स्टार्ट जनरेटिंग टेक्स्ट। तो फिर ओपन एआई और जीपीटी लॉन्च हुआ, एंड उसके बाद इट जस्ट सॉर्ट ऑफ टुक ऑफ फ्रॉम देयर। So Farzi Cafe has a lot more to offer us, and this is beetroot tikki, and this is bhatti da murg. नाइस। So bhatti da murg is almost like a chicken tikka or something. So I think you will love it, huh? Yeah, I'll so definitely. of course, one for you. So let's try. Amazing. Yellow.AI is also working with Income Tax of India. हाँ, we've also worked with Income Tax of India. पहली चीज़ है जो बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को लेके अवेयरनेस जो बढ़ाना है, तो उसमें AI will be one of the four runners to help customers ask, get answers on the programs which are running by Government of India. उनके एलिजिबिलिटी में कैसे वो होगा, कैसे उस चीज़ को लेवरेज किया जाए, एक तो वो एस्पेक्ट है। दूसरा है जो सपोर्ट एस्पेक्ट जो मैं बात कर रहा था आपसे, कि इमेजिन आपका जो आरटीओ है, आपको आरटीओ में अगर सर्विस चाहिए आज, तो कुछ कुछ आरटीओ डिजिटाइज हो चुके हैं, लेकिन आप इमेजिन करिए अगर आप व्हाट्सएप पे ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कर सकते हैं, अपने फाइन्स पे कर सकते हैं, तो कितना वो फ्यूचर कैसा रहेगा कि आपका पूरा सर्विस व्हाट्सएप पे आपको ऐप भी नहीं डाउनलोड करना है। तो वहाँ पे एआई बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तीसरा है जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, जो रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम है, उनमें स्पेसिफिक यूज़ केसेस के लिए एआई विल बी अमेजिंग। तो ट्रैफिक मॉनिटरिंग हो गया, सॉइल मॉनिटरिंग हो गया, कहाँ पे ज़्यादा पानी आ रहा है, क्या प्रेडिक्शन है, कहाँ पे क्या क्रॉप ग्रो करना चाहिए। तो ये सब चीज़ों में एआई हमको उस तरह का इंसाइट्स देगा जो कि नॉर्मल अगर इंसानों को कंप्यूट करना हो एवर चेंजिंग डेटा पे बहुत डिफ़िकल्ट है। तो हमारा जो डिसीजन मेकिंग टाइमलाइन होगा जो हमारे गवर्नमेंट के लिए है, और जो लोग काम करते हैं उसमें, वो बहुत फास्ट हो जाएगा एआई की वजह से। और उसके वजह से ऑब्वियसली इकॉनमी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आएगा, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें बहुत एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा उसकी वजह से। सो ऑल थिंग्स लुक वेरी गुड फॉर गवर्नमेंट टू लेवरेज एआई। So how do you like the food? I love the food. So I'm just trying out the bhatti ka murg now. Bhatti da murg, yeah. Favorite movie क्या है आपकी? I mean, what do you binge on? I love हिंदी सिनेमा। अनुराग कश्यप की एक मूवी आई थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर। Oh, हाँ। 1 और 2, तो आई थिंक वो मेरी ऑल टाइम फेवरेट मूवी रही है। तो आपको 1 सरदार खान वाला पसंद था, या बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल? मुझको सेकंड पार्ट ज़्यादा पसंद आया, जब नवाजुद्दीन when he comes and takes over, when he comes and takes over and builds a new empire altogether. So I really enjoyed that So movie. you see yourself on the second part of even in your life? Yeah. I definitely see with that a lot more. और उसमें अंडरलाइन वो भी चीज़ है, मतलब एक तो है कि एंटरटेनमेंट के तरीके पे आप देख रहे हैं, ऑब्वियसली इट्स लॉट ऑफ फन, बट दूसरा लेसन आई थिंक वो है कि अगर आप फोकस करके चीज़ों को करें, आई थिंक व्हाट फैसल डिड इन दैट मूवी आफ्टर ऑल द इवेंट्स व्हिच टुक प्लेस, सब चीज़ों के बाद उसने फोकस करके वो किया जो उसके पहले लोगों ने नहीं कर पाया था। तो आई थिंक ज़िंदगी भी वैसे ही चलती है कि अगर आप फोकस करें और आगे बढ़ें तो थिंग्स चेंज ड्रास्टिकली, जो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं लोग। So I think I had a really nice conversation with you, and we'll wrap it up now for now.
And I hope that we Yeah. keep on, Yeah. meeting and, No, definitely. And you have to come again and again and again. Yeah, for sure. Where? On the Rohit Sinha show. Yeah, no, definitely enjoyed Rohit, all the conversations and all the amazing food here. So look forward to a lot more conversations moving forward. Thank you.